Our big focus. After the atrocity on Saturday, where he was let off on bail on the condition that he would have to write a 300-word essay, the 17-year-old, 8-month-old juvenile who had mowed down two techies in a speeding Porsche finds himself back before the Juvenile Justice Board as we speak. This time, the Pune police, the Maharashtra government, and in fact the entire nation is hoping that the Juvenile Board revises and reverses its order, rejects this brat's bail and decides to try him as an adult and face the full ramifications of his consequences. His father, Vishal Agarwal, who could spend 2 crores to get a Porsche for but could not get rupees 1,750 paid in order to get a registration plate for the car, has been remanded to 2 days of custody, along with Mumbai club staff who supplied this minor with alcohol. Today, if the bail grant is reversed, it will come down to the efforts of the Pune police and the state government. But how this boy was granted bail in the first place, and that too under some bizarre conditions that we have described before, remains a matter of question. The answer perhaps is in the man that you will now see on your screens, Sunil Tingre. An NCP MLA from the Ajit Pawar faction, Tingre is accused of visiting the Yerawada police station right after the accident and influencing the cops into letting this brat off easy. This is his defense. Listen in. पुलिस स्टेशन में मुझे जब ये घटना यहाँ पर हुई, तब मुझे रात के 3:21 पे मेरे पीए ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उन्होंने उसमें मुझे बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें मैंने उनको बताया जो भी कायदे से बनता है वो सब ऑफेंस आप लगा सकते हो। Now let's analyze Sunil Tingre's statement in detail. This is what he admits, that he knows Vishal Agarwal, having worked with him for several years before he entered politics, and that he got a good call from his good friend right after his son had been caught attempting to hit and run and was being beaten up by onlookers. Critically, Tingre also confirms that he did visit the police station just hours after the incident. However, he denies interfering. Instead, he claims that he only asked the cops to act as per the law. He also claims that he also spoke to the relatives and helped the relatives of the accident victims, and claims that any CCTV recording will show that he did not try to influence this case. But viewers, let's try and get real. And let's ask this question. Why was he there in the first place? Surely the cops didn't need a politician to tell them how to do their job. In fact, at the very least, the presence of this Neta would have been a distraction for them. Are we really to believe that a sitting MLA so close to the accused in this case and someone called to the scene of the crime by the accused was really neutral and was not trying to influence the police's investigation? The opposition does not think so and doesn't buy the Deputy Chief Minister's promise of the state standing by the victims Anish and Ashwini. Listen in. पूना की घटना पर श्रीमान राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया, उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और उन्होंने इस घटना का जो राजनीतिकरण किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो।
ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। So viewers, do you get this full circle of collusion? The sitting MLA shows up at the police station, admits he knows the accuser's family. The local cops reportedly draft a soft FIR, even delaying the medical report to disprove the drunk charge. On the basis of this report, the Juvenile Justice Board then grants bail in just 48 hours. It's a terrifying trifecta that impacts every time an Aam Aadmi tries to get justice against someone who is high and mighty. And if you think this circle of collusion was just in this case, think again.